Hello students, myself Rakesh Misra. This is part third video of long and short type question, revisional video of long and short type question from health and diseases. This is all about matter of class 9th. Here I have selected you the different long and short type question, maybe 1 marks, 2 marks, 5 marks from the side book, from NCERT exemplar and sample paper that may probably ask in upcoming examination. So make sure that you have the pen paper in order to write the important conclusion, important explanation regarding the video lecture and regarding the question. In previous two video lecture, you have learned the question number 1 to 10 from part 1 and question number 11 to 20 from part 2. This is the part 3 video, revisional video of health and diseases. As you all know, overall lesson from health and disease is over. An important MCQs fill in the blanks true false type question was actually over and revised thoroughly in previous few video lecture. Then here I have selected you for long and short type question from the lesson health and diseases. Now without delay timing, let back over the question number 20 onward. In previous video lecture you have learned the question number, revision of question number 11 to 20, and I hope you also prepare the short notes from that question as per question and answer in your copy. So one by one you should learn the each and every lesson that I have taught, that I have completed in 2 weeks before, and in this video now you are going to study with the health and diseases and their revision, important revision from question number 20 onwards. So back on the board in order to understand the important concepts and the questions from 21 onward. Now the question number 21. Actually in previous video lecture you have learned the question number 1 to 10 and 11 to 20. In this video lecture you will learn the question number 21. In previous video you have learned about the why precaution, what precaution would you take to justify the prevention is better than cure, and I have aware you the precaution for the food, precaution for the water, precaution for the water, and also precaution for the fresh air, that all is necessary for the different kinds of purpose for the good health, and also you should prevent yourself from the some disease causing vector, that is vector that may spread the disease like housefly and mosquito. So you should make all the strategies that prevent you from prevent for the growth of housefly and mosquito. That was over in previous video lecture, and I hope your concept regarding that is the prevention is better than cure is clear. And if you are missed the video, then the video is available as part 2 in channels, and you should clear your concept regarding the video lecture. Now back to the 21 question. Why is immune system essential for our health? Why is immune system essential for our health? Listen carefully. First of all, you need to know about the immune system of our body. The immune system means the capacity to fight against disease, or the system that make your body perfect against the important disease causing pathogens. It means the capacity to fight against disease is known as immunity. Capacity to fight against disease is known as immunity, and all the body parts as well as the system, internal metabolic activities as well as the system that involve with the immunity is known as immune system. And as you all know, many kinds of the WBC components of WBC, and many kinds of the internal and external organs are actually act as the immune system for your body that prevent the entry of disease in your body. So immune system actually protect yourself from the pathogens. If the pathogens attack to your body,
then the immune system get activated and start fighting against pathogens. So what important things, what are the role of immune system in our body? Immune system provide the capacity to fight against pathogens. Pathogens may be virus, pathogens may be bacteria, pathogens may be any protozoans. So that pathogens actually get killed inside the body even when they try to enter, and if they are remain unsuccessful to enter, then you should your body remain healthy throughout the lifespan. So immunity actually without medication, your body is actually able to fight against diseases, and that capacity is actually comes from the immunity, and immunity required the well developed system, and that system is known as immune system. I hope your concept regarding immune system is clear. So immune system may complete the different components of WBC, RBC, WBC, not RBC, the WBC like macrophage, lymphocytes, leukocytes, and also the skin, mucous membrane, mucous membrane. Actually these actually act as the barrier for the entry of pathogens. So all those internal external body parts that involve in the protection of our body from the pathogens, from the harmful pathogens, are known as immune system. System means not a single things, ढेर सारी चीज़ों के कलेक्शन को बोलते हैं सिस्टम. आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. इम्यून सिस्टम जरूरी क्यों होता है? इम्यून सिस्टम हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, and it form the different strategies against the pathogens in order to fight them. So the immune system or immunity is required for our body. ठीक है, चलो 22 पे आते हैं. स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. कह रहा है कि कोई दो कंडीशन बताइए जो हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, मैंने क्या बताया था? प्रॉपर नरिशमेंट. प्रॉपर nourishment. Proper nourishment means all about, we are talking with the nutrition. All about here the matter is nutrition. Your nutrition should be proper. If you are having lack of any nutrition, then you will suffer with many kinds of related problems like malnutrition, deficiency of vitamin D, that is rickets, deficiency of proteins like the quashicorus, marasmus. So many things may appear in your body even when you are suffer with the malnutrition or the nutrition, lack of vitamins, minerals and other essential biomolecules that are required for your growth and development is actually lack. The second essential condition is the clean environment. Clean environment. Clean environment all time necessary for your body, for your good health. If you are having no any clean environment, then the mosquito or housefly may able to carry the different kinds of pathogens from unhealthy environment to your healthy environment, and then you will suffer with that kinds of problem that may spread from the microorganisms or the housefly or mosquito. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल that is the personal hygiene. Third one, personal hygiene is also responsible for the good health of your body. So these are the different conditions that are essential for the good health. The conditions are proper nourishment, clean environment, personal hygiene, etc. ठीक है, चलो आते हैं 22 पे, 23 पे आते हैं. 23 नहीं है, अब हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे आ गए. ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में इससे पहले क्या था? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था. ठीक है, इसके पहले क्या था? वेरी शॉर्ट टाइप था. ठीक है, VS से जिसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप, और ये क्या है? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन. इसको हम लोग थॉरली रिवाइज कर रहे हैं एक एक करके. इसको थोड़ा सा आप शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप पे क्या है, उसमें आपको ज़्यादा आपको 1 से 1.5 लाइन में लिखने रहेंगे, और इसमें है 2 से 3 लाइन में इसको फिलअप पॉइंट आउट करना रहेगा. ठीक है, वाई इज मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबीज. वाई इज मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबीज. एक्चुअली
द मदर्स मिल्क इज नोन एज कोलोस्ट्रम, नोट कर लीजिए, it is colostrum and it is ordinarily differ from the normal milk. It is yellow in color. It is yellow in color. Early milk is the yellow in color, later become white, and that milk is actually consist a lot of protein as well as the disease fighting antibody like IgA. IgA antibody actually able to fight with the bacteria, able to fight with the bacteria and many kinds of viruses too. So the colostrum consists IgA antibody. If the milk is fed by the child, then the IgA will turn into the body of child, and next time if the child suffer with any bacterial disease or viral disease, they will get protected. So early 6 month of milk feeding is required for the baby from the mother. Early 6 month, the early 6 month of the milk feeding is required for the baby for their overall protection. Not only the IgA and protein available in the mother's milk, mother's milk also consists a lot of another substances which is actually required for the growing babies, or which is actually required for the growth of babies. So I hope your concept regarding mother's milk is clear. Mother's milk, colostrum, that are having nutritional supplements, protein, you should make the list what important things present in the mother's milk. The IgA antibody, a lot of protein without any, no allergic response, means no allergy, it means without allergy. Third is it consists the calcium ion, potassium ion, phosphorus, etc. This is very important. It also consists the lot of amount of fat and cholesterol that actually provide the energy to growing baby. That's why the mother's milk is necessary or best for the babies. IgA antibody, protein, the different kinds of minerals and fat is also present in the colostrum. The mother's milk is known as colostrum, and that required for the growing baby. Now next condition is, in what ways does the breastfeeding of infant protect them for the infectious disease? कह रहा है कि किस तरीके से ब्रीस्ट फीडिंग जो है इन्फेंट को, यानी छोटे बच्चे को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्टियस डिजीज से. लिखेंगे एज वी नो दैट द मदर्स मिल्क कंसिस्ट immunoglobulin IgA, that is a type of antibody, and that able to fight alone with the bacterial disease, and also resisted some viral disease, It means with the help of protein, with the help of immunoglobulin IgA, the baby or infant itself able to fight with the bacteria as well as the virus. So the breastfeeding to infant protect from the infectious disease like disease of bacteria and virus, because for the protection of bacteria and virus there is need of development of antibody inside the body. Through the breastfeeding, through the mother's milk, the ready-made or artificial, that is natural antibody, already made antibody actually comes by the mothers. So there is no need to make the body antibody for the inside the body of infants. बॉडी में जनरली अगर डिजीज़ फाइटिंग की एबिलिटी आती है तो वो क्यों आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि पार्टिकुलर जो बेबी है वो क्या करता है, वो उसके अंदर सबसे पहले क्या बनना चाहिए, एंटीबॉडी बनना चाहिए. अगर एंटीबॉडी नहीं बन रहा है तो फाइट नहीं कर पाएगा. एंटीबॉडी ऑलरेडी मिल रहा है तो कितनी बड़ी बात है कि हमको मिल्क भी बच्चा पी रहा है और साथ साथ उसको बाहर से एंटीबॉडी भी मिल जा रहा है. ठीक है, तो ये एंटीबॉडी एक्चुअल में प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्टियस डिजीज़ से, जिसमें बैक्टीरियल डिजीज़ है और साथ साथ कुछ वायरल डिजीज़ है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि वायरल डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है और साथ साथ कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है. आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा. ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट.
राइट 4 कॉमन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। कह रहा है मलेरिया के कुछ 4 कॉमन सिम्टम्स लिखे। पहला तो आप लिख लीजिए फीवर, ठीक है। पहला फीवर, फीवर कितने तक पहुंच जाता है? 160 106 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है चिल्स एंड शिवरिंग, ठंडा लगता है और कपकपी पकड़ लेती है। चिल्स एंड शिवरिंग, ठीक है, ठंडा लगता है और कपकपी पकड़ लेती है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो फास्ट ब्रीथिंग है, ठीक है, जल्दी जल्दी सांस चलता है, सांस फूलता है, फास्ट ब्रीथिंग। फोर्थ है इम्पोर्टेंट थिंग्स है, फोर्थ जो है इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो पेन है, हेडेक होगा, जॉइंट पेन होगा, ठीक है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एपेटाइट लॉस है फिफ्थ, अगर लिखना चाहते हैं, भूख नहीं लगेगी, एपेटाइट लॉस, भूख नहीं लगेगी। तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, फीवर, चिल्स, फास्ट ब्रीथिंग, पेन, एपेटाइट लॉस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मलेरिया के सिम्टम्स हैं, ठीक है। 4 पूछा हमने, 5 डिस्क्राइब कर दिया, 5 यहाँ पे मेंशन कर दिया। चलो नेक्स्ट, नेम 2 बैक्टीरियल डिजीज, नेम 2 बैक्टीरियल एंड 2 वायरल डिजीज ऑफ ह्यूमन एंड आल्सो सजेस्ट देयर प्रिवेंशन मेजर। 2 बैक्टीरियल और 2 वायरल डिजीज को, तो वायरल डिजीज में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले वायरल डिजीज में लिखेंगे कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो आपके सिलेबस में लिखने के लिए कोविड-19 में लिख सकते हैं, लेकिन कॉमन कोल्ड आपके सिलेबस में। सेकेंड वायरल डिजीज क्या है? सेकेंड वायरल डिजीज इज द पॉक्स, ठीक है। अब और भी बहुत सारे वायरल डिजीज है, फॉर एग्जांपल एड्स है। तो अभी आपको क्या लिखना है इसके बारे में? अभी आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखना है कि ये कैसे प्रिवेंट करता है, कैसे अपने आप को बचाते हैं, कैसे हम कॉमन कोल्ड से बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? ऑलवेज यूज मास्क, ऑलवेज यूज मास्क, हमेशा अपने आप को मास्क लगाना चाहिए, ठीक है। यूज हैंकी एट द टाइम ऑफ स्नीजिंग, जब आप छींक रहे होते हैं तो हमेशा हैंकी का यूज करिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेवर ट्राई टू टच, नेवर टच अननेसेसरी थिंग्स, किसी भी अननेसेसरी थिंग्स को छूने से आप बचें। वॉश हैंड बिफोर, वॉश हैंड बिफोर ईटिंग समथिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए कॉमन कोल्ड से रिलेटेड, ठीक है। पॉक्स से रिलेटेड आप कुछ पॉइंट्स बता देना, इससे कैसे बचेंगे हम पॉक्स से रिलेटेड। एक्चुअली इन केस ऑफ पॉक्स द एपिडर्मिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन गेट सफर्ड, एपिडर्मिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फॉर्म द colony of form the bacterial source that can spread from one person to another person. So the use fresh towel, use fresh towel, clothes, bed sheet, bed sheet. It means each time the clothes, bed sheets, anything that are associated with the pox patient never utilized by the healthy person. It means it should always separate and daily wash the cloths, bed sheet and the towel that used by the pox patients should daily washed by the hot water and the sodium hypochlorite solution. Keep in mind. So pox virus can spread by the use of, by the direct contact of the healthy person with the person that are affected by the pox by using the cloths, towels, bed sheet, etc. So always prevent yourself by the direct using of cloths, bed sheet, towels and many other things that are used by the particular pox person. So you should also protect yourself from the pox virus as well as the bacterial virus. तो वायरल डिजीज एज वेल एज द कॉमन कोल्ड वायरस। अब बैक्टीरियल डिजीज से अपने आप को बचाने के लिए पहले बैक्टीरियल डिजीज के 2 एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले टाइफाइड, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है और साथ साथ एक दूसरा बैक्टीरियल डिजीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कॉलेरा, ठीक है।
कॉलेरा। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है और कॉलेरा कैसे होता है, विब्रियो कॉलेरी से। ठीक है, ये विब्रियो कॉलेरी से होता है। और टाइफाइड कैसे होता है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो अभी बताते हैं कि टाइफाइड से कैसे आपको बचना है। इसमें यही दिया है कि 2 बैक्टीरियल डिजीज लिखिए, 2 वायरल डिजीज लिखिए और खुद को उन वायरस और बैक्टीरियल डिजीज से बचने के तौर तरीकों के बारे में बताइए। टाइफाइड, देखो कोई भी चीज़ अगर जानना है कि कैसे बचना है तो सबसे पहले ये जानिए कि कैसे फैलता है। टाइफाइड फैलता कैसे है, ये इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से फैलता है। कैसे फैलता है, इन्फेक्टेड फूड एंड इन्फेक्टेड water से। So each time when you are going to feed something from the shop or from the any other home, then you should always use the fresh food. You should always use the fresh food and make sure that the food are not in touch with the person that are unhygienic. अगर वो फूड जो है किसी अनहाइजीनिक पर्सन, जैसे हाथ से वो निकाल के लड्डू दे रहा है, हाथ से निकाल के उठा के समोसा दे रहा है, तो उस पर्सन के द्वारा हो सकता है कि टाइफाइड आपके बॉडी में एंटर कर जाए। ठीक है, तो हमेशा जो है पर्सन जो कोई भी फूड आइटम बेच रहा है या आप किसी क्या खा रहे हैं, अगर वो अनहाइजीनिक है तो वहाँ मत खाइए। दूसरी चीज़ है फ्रेश वाटर, हमेशा फ्रेश वाटर का यूज करना चाहिए। अगर फ्रेश वाटर नहीं है तो आप पानी बल्कि ना पिए उस समय, कुछ देर तक चलेगा, लेकिन फ्रेश वाटर हमेशा यूज करना चाहिए। तो इन्फेक्टेड फूड और इन्फेक्टेड वाटर से ही फैलता है और इसका अवॉइडेंस भी इन्फेक्टेड फूड और इन्फेक्टेड वाटर है, जिससे आप टाइफाइड से खुद को बचा पाएंगे। ठीक है, कॉलरा का भी सेम कंडीशन है। कॉलरा हाउस फ्लाई से, हाउस फ्लाई इसका कैरियर है। हालांकि कुछ केस में टाइफाइड भी हाउस फ्लाई के थ्रू वन पर्सन से फैलता है दूसरे पर्सन में। तो हमेशा घर को थोड़ा सा साफ सफाई रखें। इफ़ योर होम इज़ नॉट एक्चुअली आइडियल फॉर द cholera, for the spread of cholera and not actually ideal for the house fly, then probably the cholera remain in fail to spread out in your surrounding. It means your home should be neat and clean. Your home should be neat and clean, and your environment where you live should be neat and clean. So always make sure that your home are actually full free from the garbages. Dustbins are often remain closed, as well as the sewage and everything almost remain closed. That's why you should always prevent yourself from the bacterial disease as well as the viral disease. So the 2 bacterial disease here I have described you the cholera and typhoid, and 2 viral disease here I have described you the common cold and pox. There are so many examples that you can redefine the bacterial disease and viral disease. The 3 more bacterial disease and 3 more viral disease is your homework, and mention at least one precaution measure for each disease, each bacterial disease and for each viral disease, to protect themselves from, to protect yourself. This is your homework. So explain the 3 other viral disease and 3 other bacterial disease and their precaution measure, their prevention measure to protect yourself from that disease. I hope you can do it. If you have any problem, then make sure that your problem should not worry. If you are regular viewers of video, then your concept regarding the particular disease is clear. So in this video lecture, you have learned the question number 21 to the last question, 21 to the last question of very short answer type, and 1 to 4 question number 1 to 4 from short answer type, from 1 to 4 short answer type, and 21 to last from very short answer type. And there let I remind you, this is the part 3 video of health and disease. In next video lecture, I will make sure you that I will probably revise the question number 5 onward from the short answer type question. So let rest and revise thoroughly that I have revised in this video lecture. That is, you should make your notes from 21 to last for the very short answer type,
and 1 to 4 from the short answer type, and write the answer in your own language after watching the video carefully. In next video lecture, I will revise the question from short answer type from question number 5 onward, that is 5 plus. Thank you.